Hey guys, welcome to another video for the High Worth Cycle series. This video is going to be a testimonial compilation of all the results that people have been seeing in the past couple of months that I've been working with them. These results are just phenomenal, and when you watch this video, just see what all you can relate to, what all feels amazing. मैं बस वही कह रहा था कि मजा आया मुझे। बहुत मारा लोगों को, टीचर्स को मारा, कई लोगों को मारा मैंने। सही। जब मारना चालू करा तब तो उतना गुस्सा नहीं था, पता नहीं फिर धीरे धीरे गुस्सा आता गया। हाँ। पीछे से गालियां दे रहे थे ना, गालियां फिर जब देते तो अलग ही और गुस्सा आता है। तो फिर धीरे धीरे शक्लें याद आती गई, बहुत शक्लें याद आई। बहुत ज्यादा पीस फील कर रहा हूँ मैं अभी। क्या हुआ कि जो मेरा 8th क्लास वाला जो इनर चाइल्ड था, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम वो ब्लिस फील करी। मतलब जब वो बिल्कुल एनर्जी से फट रहा था, मतलब जॉय से फट रहा था वो, मतलब कि he was like radiating कि यार मैं हूँ, मतलब like I am like that energy source। and जैसे भी आप फील करते हो ना when you're blissful कि just simply you're like a balloon of energy, तो वो वैसा फील कर रहा था। so that was my thing। that was good। मतलब अच्छा लगा यार, मतलब ऐसा लगता है कि मैं कभी हिट कर ही नहीं पाऊंगा किसी को। अभी चाहे हमने रियल में नहीं किया, बट ऐसा लगता है कि अब मैं कर दूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे को करना पड़ेगा ही। भाई बहुत रिलीफ फील हो रहा है, मन में बहुत काम है मेरे ये एंगर रिलीज करने के बाद। मैं कहा अच्छा ये तो ऑलरेडी, और वो जो बाप ने बोला ना कि स्पिरिट एनिमल है, व्हाट इज द वॉल्यूम, आई हैड अ लाइन, आई वाज लाइक आओ ले सकते हो, ले लो पंगे। When we're doing this thing, anger release process, all the anger, that memories of when I was in 4-year-old kid, like when he was beating my mother, I was like hiding under a bed and I don't want them to fight, that came back and brought back a lot of anger memories towards my dad. So the emotions that I used to feel before, like the intensity was so intense at that point of time, you know, when we are doing that workshop, and I got that fever 103 104 degrees Celsius, and sometimes I do wonder what if this thing didn't happen. I'm like, oh god, like, you know, my school friends come up to me and they're like, dude, what are you like, what happened? स्टार्टिंग में बिल्कुल रोना तो आ ही रहा था बहुत मुश्किल से। then after a while actually I opened up and little bit tears, like पूरा तो नहीं रो पाया मैं भी। I think somewhere the logical mind has come and fucked it up। हमने विजुअलाइज किया था that pain that was not there at the end of it। मैं उसे फील कर रहा था और मोस्टली मेरे को फीलिंग आई है कि मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे, जैसे कि डर नहीं लगता किसी को बहुत ज्यादा, मतलब कि डर लग रहा है। और वो मतलब कि तुम बोल रहे हो वोकल कॉर्ड्स सुनाई देनी चाहिए, बट वो निकलती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि किसी से डर के, मतलब कि हम ऐसे बैठे हुए हैं। रात को घर पे कोई मेहमान आए थे, उनको छोड़ने गए थे, मैं उठा कहाँ है, रोए पीट लिया, अपन चुपचाप होकर बैठ गया वापस। आ रहा था उस चीज को लेके, अब रोना नहीं आ रहा था क्योंकि रो तो रात को लिए थे जम के। And like one of those girls was like, I used to you like, now we are dating, she was in the same batch as me, right? And for her I didn't even exist, and like now it's like you are a completely different person. Now I get along with him pretty fine, and with my mom also it's pretty great with my family. And now with my dad I'm finally able to act like the kid, and like he's my dad, and we have like a pretty like good relationship now. Now if someone tries to do a power game, you just do a power game. I'm not gonna react to your power game. Either you have to lose it, or you just leave. अपने इनर चाइल्ड को भी देखता हूँ ना, मतलब कि जिस कंडीशन में मैं हूँ, जिस तरह से मैं हूँ, फिर मतलब पुरानी फोटोज भी देखता हूँ अपनी, मतलब हो गया है कि अपने आप को थोड़ा सा, मतलब कि हाँ ठीक है अभी इतना भी बुरा नहीं, अच्छा है तो। I had a very mild sensations in my stomach area। more or less इसमें बस throat heaviness लग रहा था, जैसे कि अंदर मतलब स्वेल अप हो रहा है, जैसे कि मतलब अपनी सांस लेने की वजह पे स्वेल हो रहा है, तो वो जगह कम होती जा रही है सांस लेने। like that I felt। जब से हमने पहला प्रोसेस किया और तब से लेके अब तक ये डिफरेंस तो है कि मैं अपने आप को थोड़ा पसंद करने लग गया हूँ। While giving those worthiness वाला affirmation, I really felt it। Beyond thing वाला जो था, I was peeling all the layers conditioning that had happened, तो मैं और beyond जा रहा था, and because conditioning बहुत young age पे हो गई थी, तो I was trying to go more beyond
with that, and I could just imagine myself, being exactly in the moment. जैसे ब्रेथ वर्क हम ज़्यादा तेज हो रही थी ब्रेथ, तो नॉर्मली जब भी मेरे को कोई फील आती है तो मोस्टली मेरे हाथ पैर कांपते हैं, वो होता है। वो चलते एंड में वो बिल्कुल स्मूथ हो गया कि मतलब मैं तेज ब्रेथ मेरी तेज ही चल रही है, बट वो उस तरह से कुछ एकदम से फील नहीं हो रहा कि हाँ मेरे हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। Right. So once we processed it, after that, like the pattern won't go that easily. I have to still work for it, but it was conscious in my mind. Okay, so you were aware of it now. Aware of it. So this is one thing that I found, that even if you're aware about something, you can finally begin to change it. Yeah. Because before it was not in my awareness. So I started changing, and I would find myself doing it. Then I would like come back to it. It was a bit difficult in the start. Yeah. But once I got hold of it, I finally was able to change my identity to a level where like. And I was like, मैं सो रहा हूँ, I'm going to sleep. I can't handle this. This is so intense for me. I wasn't able to. Yeah. walk. So basically, your emotions were coming up, and that turned into a fever. Fever, yeah. Right. And I watched that movie Tare Zameen Tare Par, Zameen Par, and the I vulnerable cried state. a lot. And I cried that. Cried. So basically, you could finally let your emotions out and feel them, which were blocked for years and years. Yeah. It was a lot of a doing book, but I could, because of all the inner work, I could realize where it's coming from. Yeah. Like it just tells you how to fix your conversations. Yeah. Like, but I know the deep science behind it also. Starting से जो भी process था, we were feeling little bit of uneasiness. Then afterwards, when it got transition, then we went to the sanctuary and everything. I started feeling like chills in my body. Yeah. Body में जब भी मैं वो feel कर रहा था. Then after coming back, फिर वो dance, फिर everything. Like I'm a lot of energetic right now. Maybe like पता नहीं जिम जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा लग रहा है। चिल्स वगैरह आए थे काफी बॉडी में, जब वो लाइट शाइनिंग वाला था ना, वो काफी सही मोमेंट था। बट एज सून एज स्टार्टेड तो फिर मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, पता नहीं क्या हुआ, वो फ्लो में बहता ही गया। फिर फाइनली जब अभी हमने डांस किया इनर चाइल्ड के साथ, एनलाइटनमेंट वाली फील आ रही थी, पता नहीं क्या ऐसा कुछ रिलीज हो रहा था, स्पेशली थ्रोट और यहाँ से जब मैं थोड़ा ऐसे करके कर रहा था, तो वोकल कॉर्ड की मैं कुछ ऐसा अनलीश कर रहा हूँ, तो सही था। बहुत किया हुआ, थक गया, पूरा शरीर थक गया, पूरा मतलब आवाज भी थक गई थी, और जब बाद में हम मतलब लेट गए हैं तो पूरा मतलब बॉडी में से ऐसा लग रहा है कि वो कुछ निकल रहा है जैसे पूरी। This one thing I used to have is like earlier I didn't have a lot of friends, but now I have a lot of friends. Like I get a lot of calls from my friends, bro, how are you doing? So it makes me feel like very good about it, that okay, like something really changed from the core. A lot of times I feel I'm grounded, and this constant feeling of gratitude, and constant feeling of being full. Instead, when I compare it to earlier, it was constant feeling of lack. So it's like lack versus gratitude. Right. And this just expands you and keeps you going, and this just burdens you and makes you fall into those cycles again and again. तो जब वो कॉर्ड कट करने वाला हो रहा था ना, तो मेरे को पेट के लाइक लोअर एब्डोमेन में सेंसेशन हो रही थी, लाइक वेल अबव द ग्रोइन, बट थोड़ा स्टमक के नीचे, तो वो थोड़ा मतलब अच्छे सेंस में वियर्ड लग रहा था कि वहां से कुछ ना ऐसे रिलीज हो रहा है। I don't know what happened, but जैसे ही मैंने मतलब मेरा मदर टंग में बात करना स्टार्ट किया, everything started, डैम खुल गया basically. I started मतलब uncontrollable था मेरे लिए तो for a point of time. And after that, yes, I think felt little bit of light and everything, like which I could never say it in this all years. Like वो मैं बता पा रहा हूँ, at least like not like in front of them, but at least confronting that's one of the best things that I liked in this. बहुत ज़्यादा मैं रो रहा था, I don't know why. बीच में तो मेरा throat भी ये हो गया था, मतलब I couldn't speak. Somehow I started to speak. So then we did that process, constellation and stuff, we did that, and then we released that anger, and finally I was able to like release all that anger towards my dad, and I was finally able to like somehow accept and see him for like my dad and not somehow. And I wasn't being able to receive compliments. Right. And whenever someone gave me compliment that you are looking so cute, you are looking like this, you are this, you have this thing, and I was like. I just think like that, okay, this person is making fun of me, or he is just pulling my leg. But now
fast forward to like 4-5 years, whenever someone gave me compliment, I receive it wholeheartedly. Right. I felt कि that no वाला part was really empowering. तो मेरे को मतलब लगा थोड़ा मतलब कुछ releasing सा like from the chest and right side थोड़ा यहाँ से like कुछ ऐसा लगा. I see myself procrastinating. I can become aware of that, and I do it. And now, even now, like I don't procrastinate. Those 3 days were quite intense, right? And it takes some of the things. It takes time to land. This healing is a process. It will take time. After workshop, I used to process my emotions a lot. Like I used to feel my emotions a lot rather than just running from them. Running away from them. Yeah, running away from them. I left that thing out completely. तो इसमें जो भी था वो बहुत सारे इंसिडेंट थे, कई इंसिडेंट याद आते जा रहे थे, बहुत सारे तो बहुत मारा पीटा सब कुछ करा मैंने उधर. मतलब आई रियलाइज कि जो पहले का था लाइक उसकी हीलिंग है मतलब काफी हो गई है. बस मुझे पर्सनली अगर मैं बोलूँ नर्चरिंग पे ध्यान दे रहा है, नर्चरिंग एफर्मेशंस एंड ऑल दीस थिंग्स. बहुत सारे मेमोरीज आए एक्चुअली. मैंने जितना सोचा नहीं था उतनी मेमोरीज आ गई. And I think I kind of released जितना भी emotional charge था. Some days you might find yourself going into old patterns, but the difference is now I have realized कि okay, this is happening. It's not something earlier I couldn't even identify. This is like, if you call like the true personal development, if you have to get into it, because the thing I was searching for before, this is the real answer for that. Because most of the people, we are searching for happiness in order to feel complete about ourselves. That's why we run behind girls, we run behind money, we run behind all these aspects of life that I finally want to achieve this thing in order to feel complete. Welcome back, guys. I hope you liked that video. Peace.